Hello and welcome back to another exciting video of class 3 EVS, and we are learning our ongoing lesson sound, light and force. We have already learnt about sound, what is noise, how can noise pollution be reduced, then we have learnt about light, then we have learnt about shadows. All these things we have already learnt in our previous videos. You can check those in the previous videos. Okay, so now today we are going to learn about the third very important topic of the same lesson, and that is force. Okay, so let's get started, but before starting we will have one simple activity. So here are some pictures that you can see on your screen, and we'll go one by one from the left corner. So here you can see a person who is moving that box towards the right. Okay, he is moving, that means he is applying force. Means what he is doing, he is pushing that box towards the right side. In the second picture, one hand is there which is pressing the button. Here you can see a button is there and which is being pressed by this finger. Okay, and in the third one you can see one small toy car is there and which is being pushed by a small kid. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दोस्त गाड़ी में बैठा है और दूसरा दोस्त क्या कर रहा है, गाड़ी को धक्का दे रहा है, तो गाड़ी क्या हो रही है, भाग रही है. सो ऑल दीज आर पुशिंग. ये बटन प्रेस करने के लिए भी हमें उसको नीचे पुश करना पड़ेगा. दे आर pushing it. Okay, so this is another one force, that is pushing. Okay, now we have here a small kid, a brother and sister is there, and a sister which is pulling the brother with the cloth. Okay, उसको क्या कर रही है, कपड़े से खींचते हुए, वो घसीटते हुए लेके जा रही है. Here you can see a girl is there who is laughing. Okay, laughing loudly, and a small puppy. Puppy means छोटा सा कुत्ते का बच्चा. Okay, which is pulling her legs, her hairs. उसके बाल क्या कर रहा है, वो खींच रहा है ऐसे अपने मुंह से. In this picture where two ships are there. Okay, two ships are there. Okay, ships मतलब क्या होता है, मेंढी. Okay, so वो एक क्या हुआ, स्केटबोर्ड पे बैठी हुई है और दूसरी उसको खींचते हुए लेके जा रही है. So this is pull. Pull means खींचना and push means उसको ढकेलना. So we have here pull and push, and here you can see both of the parties, means both the teams, so team A and team B, both of them are pulling that rope towards them. Okay, so here you observe in some image there is a pull, and in some image there is a push force. So what is force? Force is a push or a pull is called force. A push or a pull is called force. What is the spelling of force? F-O-R-C-E, force. When we push something or when we pull something, that means we are applying a force. Now where you will see this force, like suppose you are playing, if you are a cricketer, if you are bowling, means you are pushing that ball towards the batsman. Okay, and if you are a batter, you also push your bat towards the ball, so that ball goes. Now in other example, if you are thinking about a vehicle में भी एक चेन होती है, वो चेन क्या होती है, धीरे धीरे उसको पुल करती है, वो जो एक्सल होता है उसको, तो उससे वो पहिया घूमने लगता है. So air, water and other things, they also extract the force. Okay, हम दिखता नहीं है, but air और water क्या करते हैं, they also can move object. अब छोटा सा पानी होगा एक ग्लास में तो लगेगा कि इसका क्या फोर्स आएगा, but you see a water which is flowing through rivers, from streams, जो नदी नाले का पानी होता है, देखो कितने जोर से बहता है, जो भी उसके बीच में आ जाएगा उसको वो नेस्तनाबूद कर देता है. So it also has a lot of force. Air also has a lot of force, it can move. ये छोटा सा विंड होता है, उससे कुछ नहीं होगा, बट टॉर्नेडोज एंड ऑल दोज, छोटा सा विंड भी अपने कपड़े वो वगैरह हिला देता है ना. बट व्हेन टॉर्नेडोज कम, ओके, थंडरस्टॉर्म्स कम, दैट टाइम दिस air can
blow your houses, वो घरों के उजाड़ ले जाए, उखाड़ के ले जाते हैं. Okay, so force help us to do many things. For each and everything we need force. For each and everything we need force, and force can move object. With the help of force we can move object. Suppose something is placed on a table, and if you are not pulling it or pushing it, you cannot move that object. अगर आपके घर पे टेबल पे ग्लास रखा है, कप ऑफ टी, तो आप उसको जब तक हाथ से कुछ पुल नहीं करोगे या फिर पुश नहीं करोगे, इट विल नॉट मूव. ओके, सो वी नीड फोर्स टू मूव ऑब्जेक्ट. ओके, टू मूव ऑब्जेक्ट you need to apply more force. Like suppose some heavy objects are there. अगर कोई बक्सा है जो heavy है, उसको उठाना होगा तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और छोटा सा होगा तो आराम से उठा के हम यहां से एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हैं. सो टू मूव हेवी ऑब्जेक्ट वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स, मोर ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी. बट ऑब्जेक्ट्स दैट आर light in weight can be moved with easily, with less force we can move. अगर एक छोटा सा, अगर ये फोन है, फोन को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने को ज्यादा ताकत फोर्स नहीं लगेगा. बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई आस्क यू टू लिफ्ट 10 kg और 15 kg, एक पत्थर हो या फिर आपका गैस की टैंक हो, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेना, कितना सारा फोर्स लगेगा. ओके, सो टू मूव हेवी ऑब्जेक्ट वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स, एंड टू मूव लाइट ऑब्जेक्ट यू नीड टू अप्लाई लेस फोर्स. एंड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आप कोई एक क्ले ले लो या फिर कोई और चीज ले लो, उसको हाथ से दबा दो, सो इट कैन चेंज द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो, जो भी एग्जांपल होगा यू कैन टेल मी. ओके, जिससे हम शेप, मिट्टी से हम क्या बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं. ओके, सो पॉटरी कहते हैं उसको, जिससे हम मिट्टी से कोई बर्तन या चीज बनाते हैं. सो व्हेन दैट on that clay, when we apply some force, that time that clay will turn into or mold into a particular dish or particular vessel. तो उसी तरह से जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, object will not change its shape. Understood? Very good. So this was from the lesson. In this lesson we have learnt about sound, light and force. What is sound? Anything which can be heard is a sound. Light means to see something we need to have a light, and if sun rays are coming and if something comes in between, it gives us a shadow. Okay, then we have learnt a force. Push or a pull is called force. Now we have an exercise, and the first question of the exercise is fill in the blanks with the correct option. So the first question is the dash dash is the main source of light on earth. What is the main source of light? Moon or sun? Is it moon? Is it moon? In daylight we can see moon. Yes, we can see moon, but daylight comes from sun only. So the answer is sun, and the spelling is S-U-N. We should speak dash dash loudly or softly. What kind of tone we should have? और बात करते हम किस तरह से बात करनी चाहिए? Loudly or softly? We should always speak softly. Okay, objects that are dash dash in weight can be moved with less force. जो heavy object होगा उसको आराम से ऐसा कर सकते नहीं, टिंग टोंग टिंग इधर से उधर मूव कर सकते. No to move objects that are heavy we need to apply more force, and those who are light can be moved with less force. So light option will come over there. Understood? Now the next question. State the whether following statements are true or false. Statement will be given. यहाँ पे एक example दिया जाएगा, and you have to decide whether it is true or false. Okay. So the first one, we do not need light to see things around. हमें लाइट की जरूरत नहीं है आजू बाजू की चीजें देखने के लिए, हम अंधेरे में भी देख सकते हैं. Is it true? No, it is not true. It is false. Next one, a shadow is formed when an object blocks the path of light. जब shadow आती है तो उससे क्या होता है, बीच में कुछ तो आएगा तो shadow बन जाती है. Shadow is formed when object blocks the path of light. Light जहां से आती है उसके बीच में object आएगा तो shadow बनती है. Is it correct or not? Yes, indeed it is correct. So it is true.
A push or a pull is called force. A push or a pull is called force. Yes, it is true. Now only we have seen it. It's true. Noise is a pleasant. जब बहुत सारा टैम 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 जब सब बचता है, सब तरफ का जो गड़बड़ गोंदल सब आवाजें आती है, those are good. No, those are unpleasant. They can damage our ears. They are harmful. So it's false. Now here you have to match the columns, and in column A we have 2 options, in column B we have 3 options. A long shadows are formed at this time. Long shadows कब होते हैं? Night time, noon time, morning and evening time. Night time में shadow आती है, कभी कभी आती है if you have light on streets and that time, but natural night नहीं होती है. So long shadows are formed during morning and evening. The shadows are the shortest at this time. Shadows कब short होते हैं? जब sun आपके टकोरे के ऊपर आके बैठता है. It comes on your head. So it is a noon time. It's afternoon time. Okay. Next question. Answer the following question in 3 to 5 sentences. इसमें क्या करना है आपको? Minimum 3 to 5 sentences, but you can reduce it also, and you can उसको खींच भी सकते हैं. What is shadow? Shadow मतलब क्या? परछाई मतलब क्या? तो बताओ. What is shadow? What is shadow? Come on, come on, come on. A dark patch formed when an object blocks the path of a light. एक डार्क का सिलहट बनता है ना. That silhouette is formed when an object block the path of sunlight. Sunlight का जहां पे आती है, जब उसको बीच में अर्थ पे पड़ने से पहले अगर कोई उसको बीच में रोक लेता है, तो क्या होता है? बाद में शैडो बन जाती है. ओके, सो दैट इज योर शैडो. हाउ कैन वी रिड्यूस नॉइज? हम नॉइज कैसे कम कर सकते हैं? Yes, we can do. When we are playing a TV, play it on a low volume. When you are speaking, speak softly. When you are playing music, that also you should play at a low volume, so we do not disturb others. As well as when you are in a traffic jam, we should not honk a horn for a regular time. नहीं तो ट्रैफिक में आके पॉ 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 बार बार करते रहेंगे, तो it will not reduce the noise, it will increase the noise actually. Now give an example of a pleasant sound. Pleasant sound कौन सा होता है? बारिश पड़ती है ना, जब पतरे पे आवाज आता है टप 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 टप, दैट इज ऑल्सो प्लेजेंट साउंड. आप अरिजीत सिंह का कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनोगे, दैट इज ऑल्सो प्लेजेंट साउंड. सो एनीथिंग जो आपके दिल को अच्छा लगे, कोई प्रेयर हो, कोई टेम्पल की घंटी हो, ओके, द बेल और द रिंग बेल फ्रॉम द टेम्पल, ओके, सो दीज आर वेरी प्लेजेंट साउंड. आप कोई गाना सुनने के बाद बोलते हो वाह 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 वाह, so that is a pleasant sound. So a soft or soothing song, soft song जो भी हो, वो songs, temple के bells जो होते हैं वो, okay, these are soothing sound. Now what is force? Now only we have learned what is force. Force is anything, push or pull. Yes, a push or pull is called force. Now look at the picture given below and identify 5 actions that involves force. तो यहाँ पे 5 एक्शन जिसमें फोर्स चाहिए वो हमें देखने हैं. सो फर्स्ट हियर अ वर्कर इज देयर व्हिच इज कैरिंग द स्मॉल पुली. उसमें क्या है? वो कचरा वगैरह जो भर के लेके जा रहा है और आराम से चल रही है. ये उसकी जो बकेट है, बास्केट है, आराम से चल रही है. नो, इट इज नॉट. वो क्या हो रहा है? उसको ढकेल रहा है. सो पुश फोर्स इज कमिंग हियर. सो व्हिच फोर्स? पुश ओवर हियर. नाउ हियर एक छोटा सा कुत्ता है, डॉगी, एंड व्हिच इज नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स प्लेस. तो इसका जो दोस्त है, जो ओनर है, वो क्या कर रहा है? उसको पुल कर रहा है. सो अनदर फोर्स, दैट इज पुल. नाउ these boys are playing ball. They are throwing balls to each other, so they are pushing the ball. So push force. Here also they are kicking the ball, means push force again. Here they are playing badminton, means they are also using a push force. So 5 examples are already there. Okay, so that's it for today's session and for this lesson also. I hope you have understood it. You all will be solving an exercise of that. For details you may visit our blog also. There you will get all those details. Solve exercise, read lesson once again.
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।